Hello, and this is the Munib Nawaz show. And today, I think बहुत कम ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा ओवर या अंडरवेल्म एट द सेम टाइम हो सकता हूँ बिकॉज आई बिन लकी इनफ टू टॉक टू सम ऑफ द पीपल हु हेल्प्ड मी इंस्पायर्ड मी led me and misled me in so many ways. But for the simple fact that I am now, according to him, at peace, I think is a big success from a couple of years ago. I'm talking to Sami Kahar. He's been a friend of mine for almost like what we just kind of figured out 25 years. And the interesting part about Sami's thing, we were in college together. हम लोग debates करते थे, and Sami then went on to a very corporate career, टाई शाही बाबू बच्चा बन के फिरने वाले. And then I met him at the gym, and I obviously मैं कहा भाई जान मुझे बता दे कुछ, and he was kind enough to help me through some stuff. Then I met him as the CEO of a production company in Karachi. And then I was like, what? Wait a minute. That means the importance of thinking that it's never too late. Because a lot of us think, yaar, we've passed that 25 mark. अब हम अपना career नहीं change कर सकते. And that is why I was like, specifically I need to speak to Sami for those people, especially, who think they still haven't figured out the reason why they're doing it. So you said 17 years of corporate slavery, in which, from the person who's known you before and after, that's possibly the only time you were not Sami Kahar. What do you think? I think it's a stretch saying that I was not Sami Kahar, because to be honest, I was, and something modest, I was good at what I did. Even for those 17 Modesty years. और आप वैसे छोड़ दें. 17 साल जो मैंने काम किया, even then I was pretty good at what I was doing. I was happy. And I always thought this is what I wanted to do. ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा कि यार I'm forced to do something. I was not happy. And a lot of people around me were doing it just for the sake of doing it because it made money. But I was enjoying it. The journey, I think a lot of it happened by default. There was no design behind it. It felt right at that time. Something happened and I'm here. All of a sudden, the whole thing changed. But the idea is that my risk factor, or my risk profile rather, is a lot more broader than the other people. ये सवाल जो आपने किया, ये मुझसे literally, I have to answer this question every other month. I teach at IB, all my students ask the same question. I go to different places for guest speaker sessions. The same question is being asked over and over again. मुझे याद है मैं आज IB में था से कोई था क्या वो सवाल? यही सवाल कि ये ट्रांजिशन कैसे हुई and how did you figure it out? Transition का तो मैंने अभी सवाल ही नहीं किया. What I want to know is what according to you was happening in those 17 years when I think because बचपन में you were a natural showman, you had a natural flair for things, and then now that you're a part of filmmaking and you showed me कि यार देख मैंने पहली फिल्म बना ली है वो J dot वाली और ये वो when we were at the shoot, so you have a natural spark in your eye कि यार ये मैंने कर लिया है. So in that 17 years, like you were saying, कि you found yourself doing that not through design but through almost you wanted to do it. वो भी showmanship तो है. ये नहीं कह सकते वो showmanship नहीं है. अगर आप, because you're going back to 97, 98 when I was speaking on the stage, और वहाँ क्या था? I was telling stories, right? Yeah. So I was, जनाब सदर and this and that, and रात की हथेली पर चांद जगमगाता है, etc., and engaging the audience. And if you fast forward 25 years, I'm still doing the same thing, but on camera. I'm telling stories and engaging the audience. The question is, what happened in the 17 years in between? Yes. I was still telling stories, nice, but corporate stories. I was still selling ideas to the people, but they were more suited people. Yeah. I was, part of it was numbers. A lot of it was numbers, but numbers still tell a story. So I was always a storyteller. And some people who know me from that part of the world will always say that he was making up stories even then. बिल्कुल. Because the numbers were probably not accurate, the numbers were twisted. But अगर आप confidence से कोई बात करते हैं तो it sounds like truth. And if you have the mic, that means you're important. Correct. तो उसको भी मैं navigate उसी तरह करा था. I wouldn't say I wasn't Sami Kahar, but the nature of output was very different. अब ये है कि there's more creative satisfaction, and one of the biggest reasons is that जब एक certain time पे आके मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि यार if I'm sitting in this boardroom and all I'm doing is to make that Excel sheet on the board look good. उसमें numbers अच्छे लगे. Is that what I want to do for the rest of my life? Even if I'm good at it, doesn't matter. Very good. Even if you're good at it, do you want to do that? Yes, and I didn't want to.
बिकॉज उसमें से बहुत सी चीज़ें But तो it took you आपकी 17 years to figure that one. Or how long did it take you to actually get to that point? 13-14 ईयर्स तो लगे क्योंकि और देखो उसके बाद you started looking for other opportunities. होता क्या है कि इफ़ यूर ग्रोइंग इफ हाँ. यूर गेटिंग मनी हाँ. एंड इफ पीपल आर प्रेजिंग यू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लियोस, तो इन दैट केस जो है आपको लगता है कि सही है, ठीक है. तो आई वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट. अब ये चीज़ अगेन यूजली ऐसे होती नहीं. आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट इवन दो आई वेंट टू IB एंड ऑल दैट, बट वहाँ पे मेरा GPA वॉज 2.67 विच इज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ इट. और आज मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ GPA डजंट मैटर. सो आई वॉज probably in the bottom 5 or bottom 6 of my class in GPA. But when I grew in my career, I was on top of everyone. I was ahead of the 4 GPA ones and all. And 32 की age में I was the regional sales director for the Gulf region for a large multinational company. तो वहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा भी अच्छा आ रहा है एंड प्रेज भी है एंड आपको अचीवमेंट भी मिल रही है, तो आपको लगता है सही है. बट जब आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद यू हैव टू डू थिंग्स विच डोंट स्टैंड फॉर योर पर्सनल वैल्यूज़. तो वो क्लैश शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि जब तक आप जूनियर लेवल्स पे होते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज देयर आर पीपल ऑन टॉप ऑफ यू कैन do your job, less responsibilities, at the same time less difficult decisions to make. I remember, and this is again something I've quoted in the past, there was a time when I'm sitting having food with a guy and I knew that after dinner I have to fire him, and he was sitting in front of me. He didn't know, और मैंने वो किया obviously because that's the decision I had to make. Why? Because that Excel sheet had its cost and it didn't look nice, so I had to make the Excel sheet look nice. तो उस दिन मैंने सोचा कि is that what I want to do for the rest of my life? I'm sure you enjoyed firing it. No, I'll tell you why. Because ये इस बंदे को मैंने फायर किया. Around 3 months later, I was driving and I was with my family and on Emirates Road in Dubai. A call came out of unknown number and I picked it up and said, एक खातून थी जिन्होंने कहा कि मैं उन साहब की वाइफ बोल रही हूँ, 3 महीने से उनको नौकरी नहीं मिली, आपने उनको निकाला था, उनको वापस रख लिया. And it was devastating. I couldn't drive after that. I was sitting with my family because it was on loudspeaker of the car. They heard it and I was like, no, this is not what I want to do. तो हमारे कंपनी में ऐसा होता था कि आपको मेंटर्स असाइन होते थे. देयर वाज अ सीनियर गाय एंड आई स्पोक टू हिम. आई सेड ये हुआ है मेरे साथ. उसने कहा देखो, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन ये तो होगा और बार बार होगा. आज तुमने एक बंदा फायर किया, टुमारो माइट बी साइनिंग अ पेपर ऑन विच देयर विल बी नोटिस फॉर फायरिंग 1000 पीपल एंड पीपल अंडर यू विल बी डूइंग द सेम थिंग. हाउ विल यू लिव विद दैट? एंड देन आई सेड नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. तो ये बिफोर द 17 ईयर्स था. दिस वाज अराउंड 13-14 ईयर्स पे मार्क आ गया था कि यार ये चल तो नहीं सकता. द क्वेश्चन इज व्हाट डू आई डू नेक्स्ट. सो उस टाइम पहले फिर आई डिसाइडेड टू स्टडी फर्दर. मैंने कहा यार ये नहीं करता, पढ़ते. एंड देन आई थॉट कि ओके आई स्टडी साइकोलॉजी एंड विच मीन्स आई मूव इन टू अ बिजनेस ऑफ पर्सनल कोचिंग, मेंटरिंग एक्सेट्रा, सो दैट मुझे इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि यार एक्सेल शीट क्या कह रही है. आई विल बी माई ओन बॉस, आई विल बी हेल्पिंग पीपल. जैसे वो मेंटर मेरा था, मैं किसी का मेंटर बन जाऊंगा, उसको कहूँगा कि यार ना काम करो, डोंट फायर पीपल, बट और उसकी स्ट्रेस हैंडल कर लूँगा, बट आई विल नॉट डू इट माई सेल्फ. So you were throughout your life, as I know it, you were a showman, telling stories, selling stories more than telling stories. Then came a point in your life when you fired somebody, and then you realized, "Okay, yaar, I think what happened at that moment was two things, and this is something because I personally also identified with such problems. के पहले on site रहना shoots पे, और वो was one of the things that I thought के मैंने शुरू किया था 2003-4 में ये काम के जी. एक दिन यहाँ पे बोर्ड में I remember I was at one production house, जामी का था या मतलब किसका, वहाँ पे ना लिखा हुआ था शूट से पहले कि आपने मेकअप वाले को कॉल करनी है और आपने डायरेक्टर को डायरेक्टर होता है, कॉल शीट जो होती थी ना उस वक्त डिज़ाइनर का नाम नहीं होता था. तो आई रिमेंबर कि one day I want there to be like a designer name over there, and a couple of years later I went back to that place and वहाँ पे डिज़ाइनर लिखा हुआ था. तो it was a moment of pride and honor for me कि यार ये हो गया है, अब चलने दो. तो आई थिंक व्हाट हैपेंड विद यू आल्सो एज वेल कि शुरू में बंदे को, जब बंदा नीचे से ऊपर आ रहा होता है, उसको कहता है यार एक दिन मैं बड़ा साहब बाबू बनूंगा. जब आप बड़ा साहब बाबू बन जाते हैं आपको लगता है कि यार ये तो हो गया, और फिर उसकी डिसीजंस आती हैं लाइक यू हैव टू फायर समबडी एंड द कॉस्ट समटाइम्स मेक्स अ प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट विद यू. और फिर आपको होता है कि यार ये मसला हो गया, और फिर आपने अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू की. How did that come about in the next 2-3 years when you were doing like, you know, from psychology, mentorship to film? वो completely by design नहीं हुआ, बिल्कुल by default था. I remember 14th August 2020 की ये बात है. मैं उस वक्त हलीब का स्टेंट अपना ख़त्म कर चुका था, और जो है क्योंकि हलीब मेरे साथ पढ़ाई के साथ चल रहा था. हलीब सर्व दिस पर्पस क्योंकि मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी जो मैं छोटा मोटा काम करता रहूँ, साथ पढ़ाई कंप्लीट करता रहूँ. वो कंप्लीट हो गई. सो द ओनर ऑफ स्टिमुलस फैसल हाशमी इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. वी गो बैक अगेन 14-15 साल की तो हमारी भी हिस्ट्री है. तो ही हैड कम टू लाहौर फॉर समथिंग एल्स कम्प्लीटली,
और हम किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, तो 14 अगस्त का दिन था. 14 अगस्त को आपको पता है कि पूरी कौम रोड पे निकल जाती है. whoever has बाजा. जिसके भी अब्बा ने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान बनाने में, वो सब रोड पे होते हैं. तो पाँव पाँव करते सब रोड पे थे, और इत्तेफाक से हमें जाना था फैसल के होटल से जवाद बशीर के घर जा रहे थे हम लोग. ओह अच्छा, वाओ. हाँ, तो अगेन वो रास्ता ही. हाँ, डेस्टिनेशन वाली हमारी इंटरेस्टिंग थी. तो वहाँ पे बिलाल लाशारी एंड ऑल एवरीथिंग, एवरीवन वाज देयर. तो उस जर्नी के टाइम पे फैसल ने जिक्र किया कि कार्ड्स हो रहे थे वहाँ पे, कार्ड रीडिंग. हाँ, वही हो रहे थे. मुझे नहीं पता था, मुझे वहाँ जाके पता चला कि वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज यस. अच्छा. तो उस जर्नी में फैसल ने जिक्र किया कि ही इज लुकिंग फॉर समवन टू रन स्टिमुलस द बिजनेस. तो रैंडमली मैंने उससे कहा कि यार आई कैन डू इट. ठीक है. एंड मुझे नहीं पता था, आई डेंट नो कि फिल्म बिजनेस को रन कैसे करना. आई हैव सीन फिल्म्स, आई हैव अटेंडेड फिल्म शूट्स एज अ क्लाइंट फॉर ऑल माई लाइफ, बट मुझे नहीं पता था कि हाउ डू यू रन द बिजनेस. इंटरेस्ट हमेशा से था ऑब्वियसली. तो मैंने जो है, जब मैंने उसको ये कहा, तो नेक्स्ट 2 आवर्स बिकॉज हम रोड पे फंसे हुए थे. जाने में लिबर्टी से 2 घंटे लग गए मॉडल टाउन जाने में. उस 2 घंटे में डिसीजन हो गया. दैट वाज 14th August एंड 14 September वाज माय फर्स्ट डे एट स्टिमुलस. आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस. अब जब मैं किसी को स्टोरी सुनाता हूँ, विच इज़ ट्रू, सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमने डिस्कशन कंप्लीट किया. वी वेंट टू जवाद बशीर्स हाउस, देन आई वेंट टू फैसल्स होटल एंड आई स्पेंट 3-4 more hours in his room. In the morning I had a new job. That's how I tell people, and people are like, okay, this sounds really shady. This is true story. But this yeah, that's how you get a job done. This is how it happened. Because When you want to get a job, I you was do in the a job. room of the owner of the company, and in the end I had the job of CEO. So that's how it happened. But plan नहीं था कोई. And then उसके बाद the last 2 years have been an interesting ride. I won't say smooth. Casting couch basically वो bed था या Employment couch, वैसे bed था, and I was in the bed. He was sitting on the sofa, I was in the bed because I was cold. वो कमरे में एसी चल रहा था, मैंने हाफ स्लीव्स पहना हुआ था. Sami, you do realize you said anything can be said on this. That's the whole fun of it, because this is going to be what your children will be watching in a couple of years. I'm just saying this is how I tell people, and there's no exaggeration in this. हुआ यही है. Telling stories. But इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. यही हुआ है. That's what happened. बिल्कुल. अच्छा, so in your sort of understanding of psychology, and you've helped me out in a couple of instances as well, what do you have as your personal sort of philosophy on and off life? Like, like you're constantly saying that it did not happen by design, but I think it happened by design. But what is your take on the philosophy? What is your philosophy of life right now? यार बहुत सारी और हर चीज़ के बारे में अलग अलग मेरी philosophy है. But let's pick up, that's a good point. Let's pick up well-being, personal, your relationship with yourself. अच्छा, generally in इस किस्म की चीज़ों पे, और generally my philosophies in life anyway are not very popular opinions to start Which is cool. For example, in this regard I would say that happiness is overrated. Okay. ठीक है. Happiness is transient. आपने मेरे पूरे कोर्स को अपने अंडरमाइन कर दिया. नहीं, लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट मैं बिलीव करता हूँ उस बात पे. वो हैप्पीनेस है जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया, probably you'll explain to people as well, but that is something you cannot always have. You're not supposed to have it constantly. हाँ, happiness is transient. आज है, कल नहीं है. आज है, जैसे हर चीज है. शायद हर चीज नहीं. हम डिबेट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हैप्पीनेस हम सारी जिंदगी करते रहे, छोड़ दें. हाँ, तो लोग जो हैप्पीनेस की क्वेस्ट में है, दोज पीपल विल नेवर बी हैप्पी. ओके. पीस इज कंफर्ट, इज परमानेंट. ओके. सो अगर आप हैप्पीनेस, आज आप हैप्पी हैं नहीं, पीस इज अ मोर परमानेंट इमोशन एंड पीपल शुड स्ट्राइव फॉर दैट. Okay. Peace could mean you could be peaceful without being without having a lot of happiness. ठीक है सब कुछ हार्मोन से interchangeably use होती हैं वो चीज. In my understanding of things, it's interchangeable, but I understand your perspective. तो जैसे I am at peace. I might not be absolutely happy. Okay. But I don't need to be. Okay. My life, my work, people around me, we can all be all good with each other with peace. I don't have to be happy. But there are moments when I'm happy. But it comes and goes. So my understanding of that is basically that happiness is peace. In my understanding of it, because what you are defining, because it's scientifically not proven that itna quotient, itne kilojoules of this is equal to happiness and itne kilojoules is peace. But I think that moment, that place where you are at peace with yourself is also where you are actually happy. Because उस वक्त आप ना contentment लोग कह लें, peace कह लें, happiness कह लें, उस वक्त आप मैं elation की बात नहीं कर रहा, ecstaticness की बात नहीं कर रहा कि आप हाँ मैं बहुत खुश हूँ. When you are happy, वो नहीं होता एक E is equal to MC square है, उसको अब आपने prove नहीं करना, वो बस है.
चले ठीक है. ठीक है, वो मेरे लिए है. बट सो योर पास, हाउ डू यू अचीव पीस? Again, I go back to how I was a bit early to everything. मैंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बहुत जल्दी अचीव कर ली, ठीक है, विच इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड. एक तो उसमें इशू ये होता है कि आप फिर फर्दर ग्रो कैसे करेंगे. बिल्कुल. और आपका जितना जल्दी आप ग्रो करेंगे उतनी जल्दी स्टैग्नेंसी आएगी, ठीक है. तो एक तो ये चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि जो है जब मैं वो अचीव कर भी रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता दे स्टॉप्ड मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी एंड दे लॉस्ट देयर मीनिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब ये अगेन हुआ है मेरे साथ कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन मार्केटिंग इन माई कंपनी दैट आई एम वर्किंग एंड आई गेट द अवार्ड. इफ आई डिड नॉट गेट दैट अवार्ड आई बी सुपर पिस्ड because I deserved it in my view. I was like, no one else deserves it. And I deserve it. ठीक है. But when I got it, I think total 2-3 minutes of happiness. Just like 2-3 minutes of happiness happens in every other thing. So so that's how it was. And I got on the stage. Now we know why she left. We got on the stage. I got on the stage and I got the award. Before I could get down from the stage, the moment of elation or happiness was over. और मैं उस ट्रॉफी को देख रहा हूँ. मैं इस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की है. द सेम थिंग हैपेंड विद माय डिग्री. मैंने 4 साल पढ़ा, मेहनत की, ये किया, वो किया, यूके गया. आई एम हैप्पी दैट क्योंकि मैं एक डिग्री लेने जा रहा हूँ. इसके पीछे लॉट ऑफ हार्ड वर्क है. सेम थिंग जो वो पेपर हाथ में आया है एंड आई एम लाइक दिस पेपर राइट, दैट्स इट. एंड दुनिया इसके पीछे भागे. तो वो चीज़ उसने ही जो है मुझे डिफाइन कर दिया कि यार देयर इज नथिंग दैट कैन बी परमानेंटली देयर. Like I said कि nothing is permanent. So दो चीज़ें आपने इसमें बड़ी मज़ेदार बोली हैं जो कि मैं want to discuss further. One is कि when you identify with something, बेशक आपका बाबू साहबनेस हो, बेशक आपकी डिग्री हो, बेशक आपकी कोई भी मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस हो, यू स्टार्ट टू फील के आई अर्नड इट राइट, बिकॉज मैंने 4 साल काम किया, मुझे डिग्री मिलनी चाहिए, मैंने काम किया, मुझे मार्केटिंग का अवार्ड मिलना चाहिए. यू ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई इट टू अ पॉइंट वेयर यू लाइक. अब हम उसको दोनों साइडों से देख सकते हैं कि यार ये आइडेंटिटी मैंने क्रिएट कर दी अपनी कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए अवार्ड. उसके बाद वो अवार्ड ही इट लूजेज इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस. ठीक है. सो I feel कि when you start identifying with something like I was saying कि God takes it away from you and says कि अगर ये तुमने ही अचीव करना था तो दोबारा करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, एक दफ़ा देखते हैं कि क्या होता है. Some of us leave that, some of us are maybe let's assume smarter कि हम कहते हैं नहीं अब हमने दोबारा नहीं अचीव करने की कोशिश करनी. And some of us keep going back in that past and say कि यार वो अगर एक दफ़ा दोबारा कर लेते तो आगे पता नहीं क्या हो जाता. So उसके अंदर लोग फंस जाते हैं. दूसरी चीज़ that you talked about, which is far more important and relevant to me right now, is how do you set the next goal? Because हम सारे माशाल्लाह जो हमारे आस पड़ोस की उम्र वाले हैं उन्होंने एक certain level of achievement अचीव कर लिया अब. ठीक है. When you were let's assume early teens में आपकी एक ड्रीम होती है, आप mid-30s तक वो अचीव कर ही लेते हैं. कुछ हम लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ हम लोग 5 साल बाद, कुछ 5 साल पहले. मतलब लेट्स अज्यूम यू अचीव योर ड्रीम. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू अचीव योर ड्रीम यू डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ नेक्स्ट द नेक्स्ट बिग ड्रीम. चेंज. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज डूइंग ग्रेट बट दैट वॉज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इफ आई केप्ट चेजिंग दैट then there would be like what's next. What a cool idea. But so मैं डिजाइनिंग छोड़ दूँ अब. Possibly, why not? Then I moved to अब मैं रेस्टोरेंट खोल ली. Psychology में अचीव कर लिया. Then I moved to filmmaking. Nice. Filmmaking का pinnacle क्या है? Avatar probably. So I know I'm not going to make Avatar, but I can make a feature film. Yeah. Once I've made a feature film, then my next question would be what's next. Until then, तो I'm sorted. अब मैं in the last 2 years I've made 50-60 ads. 60 ads के बाद मैं 61st ad जब बनाऊंगा कल, I'll not be ecstatic. 62nd, 63rd, क्या 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे. So that's not gonna make it for me. So my next goal is making a feature film, just like any other filmmaker in the country. होता ये है कि पाकिस्तान में film making is not a profitable business anyway. So पाकिस्तान में film making is not wise, I would say. But still achievement आपको feel होती है. But filmmaking is one of those, because I've studied film, I love film. I हम लोगों की काफ़ी दफ़े इस बारे में बात भी हो गया. जो वो पर्दा है ना, that's the dream of the world. I think जब हम लोग एक दफ़ा वो कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे अगली क्या है. But वो भी अब debatable है ना. मैंने किसी को कहा कि the film I've written, I wrote a film in 2018 which I want to make. जब मैंने किसी को सुनाई तो उसने कहा यार तुम इसको वेब सीरीज बना दो.
मैंने कहा नहीं, फिल्म हैज़ टू बी ऑन बिग स्क्रीन. उसने कहा तुम्हारी फिल्म कितनी बड़ी स्केल की? मैं कहा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला. उसने कहा गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा बड़ी है. मैंने कहा नहीं. तो उसने कहा वो छोटी स्क्रीन की चीज़ है यार. और अब विद नेटफ्लिक्स एंड Amazon, Obviously, everything that's is small that. screen. तो So we covered the philosophy of life on your self relationship. Correct. Now let's talk about the philosophy on your life with your relationships with spouse, children, and then I want to discuss a couple of other things. Relationships, because relationships are basically what I feel as a human being, and I think आपकी smile मुझे बता रही है कि you can go as ambiguous in your answer if you want, or as direct as you want. The reason is that I feel we are the sum of our relationships. कुछ relationships होती negative हैं, but उसको भी एक addition हमने करना पड़ता है, वो table में आती हैं. So how do you manage considering your case scenario? My smile was because I knew कि कुछ लोग ऐसे भी इस शो को देख रहे होंगे जो मुझे जानते हैं, और कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते. जो जानते हैं वो कह रहे होंगे क्या बकवास कर रहे हैं यार. जो नहीं जानते मुझे भी बोल रहे होंगे. जो नहीं जानते होंगे हाँ यार कलमान बात की है. मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो the show ideally is for those who want to know, ठीक है. not who know. देखो एक तो ये चीज़ है कि रिलेशनशिप्स आर डिफिकल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं. कोई बंदा आगे कहता है कि नहीं मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी इजी, तो प्रॉब्ली वो शायद बहुत सर्विस लेवल पे सोच रहा है, या मे बी डजंट नो और शी डजंट नो. दे आर डिफिकल्ट एंड इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. द इशू कम्स इज बिटवीन डिलीवरी एंड एक्सपेक्टेशंस. आप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलेशनशिप क्या है? अगर ये बात बहुत क्लियर है then there should not be a problem. But people are, one, not very clear in their expectations because there is no communication properly done. And if there is communication, तो फिर अगर वो डिलीवरी नहीं हो रही एक्सपेक्टेशन की, तो then there is a problem. और अगर मेरा बिलीफ ये है कि if आपको लगता है at any stage that communication के बावजूद एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी में गैप है, then bail out. Don't force yourself to continue something. I have done that myself in the past. People who are with me have done it, probably not by choice, but because of my behavior, I would say. Because I was not ready to fulfill their expectations. And they were communicated to you okay, what their expectations. But I also communicated that I won't. देखो मेरा belief ये है कि 10 on 10 is not possible as far as emotional satisfaction. अब आपको एक रिलेशनशिप में 10 चीज़ें चाहिए. आप कहते हो जी मुझे फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, मुझे इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए, मुझे XYZ चाहिए, लुक्स चाहिए. ये मेरी 10 रिक्वायरमेंट्स हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि what part of it is compromisable and what part of it is no must have. If the other person is delivering 7 is a very good number. 7 on 10 is a perfect number. 6 is okay. 5 is bad. But if you expect that the other person will give you 10 on 10, then there's a problem. Then your expectations are wrong. So, and I was very clear that these 3 or 4 things, for example, I cannot deliver. I am emotionally constipated. Fact. I cannot express. My love language is probably gestures and body language, but not words. I cannot say it. It's not that I don't want to. Not that I don't feel it. I don't feel it. I am bad at condolences. There have been times when someone's close by, people close to someone passed away and I was sitting in front of them and I was not able to say a single word. And that's how I am. But अब इस चीज़ को आके बंदा ये कहे कि यार आप नहीं करते एक्सप्रेस, तो ये आपको डे 1 से पता है. मैं बहुत वर्बल हूँ इस बारे में, दैट आई एम नॉट. फिर आप 6 महीने के बाद मुझे कहते हैं यार यू डोंट एक्सप्रेस, तो देन यू रॉन्ग बिकॉज यू न्यू इट फ्रॉम डे 1. हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं वाई बीइंग ऑब्स्टिनेट अबाउट दिस एंड वाई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ. शायद चेंज हो भी जाए, but these things change, these changes take a lot of time. शायद 6 साल, 5 साल, 4 साल के बाद मुझे, and if 2 people are together, they rub on each other and then, you know, eventually changes happen. Expect करना कि सामने वाला बंदा just because he's in a relationship with you will change overnight is also wrong. वो भी गलत expectation. दूसरी वाली relationship की बात कर रहे हैं, मैंने अब पकड़ी है वो. हर किसी की ठीक है. हाँ. तो even parental relationship. I was 17 when my father came back to Pakistan. My mother passed away. अब उस situation में, and this is again something not a lot of people would know, that he came to Pakistan and I'm 17. I have my life in a certain way. I'm in college. वही टाइम जब हम दूसरे को जानते थे. और 17 साल में मैंने एक certain तरीके से लाइफ गुजारना शुरू कर दी. New sheriff in town and he tells me these are the new rules because now I'm back. It won't happen. अब उनकी एक्सपेक्टेशन भी है कि day 1 से अब मेरी टाइमिंग ऑफ कमिंग एंड गोइंग एंड डूइंग थिंग्स विल बी एज ही वांट्स. ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, टिपिकल 3 idiots. I don't want to be an engineer. I'm a storyteller, right? So I'm going to be on the stage and I'm not going to make machines and all. He was never happy with the idea that I want to pursue a different career. And he still thinks that I did something wrong. Despite this, I'm now 41 and all. And my younger sister, who is an engineer, he's proud of her. Up ये उनकी philosophy. I didn't listen to this. But this again is a delivery versus expectation gap. And I was never okay with the idea that I will fulfill this expectation of his because I didn't want to. And similarly, if there's a relationship I have and someone expects me to be verbally expressive, for example, or some other expectation, I don't want to do it.
and I'm very clear about this, then this expectation should be out of the picture. But if you say, no, this is a must have, I cannot compromise on this expectation, then we should be together. बिल्कुल सही है. So, interestingly enough, how difficult is it for you or for anybody as a psychologist, for anybody who is in a relationship that is not working out for them? Do you have like a few pointers, because अब आपने ये पढ़ा हुआ है तो I might as well make use of it for people who are watching and who want to know कि यार, let's assume they have 10 expectations. How difficult or how easy should it be for people to be able to walk out of commitments and relationships? मुश्किल काम है, ठीक है. मेरे लिए शायद easy. One, I've trained myself over the years to be able to face this. I can compartmentalize things and then they don't come back to my main brain कि यार आज मुझे इस बारे में कुछ करना है. But लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता ये चीज़ करना, and people take a lot of time to heal. उनका coping mechanism different है, मेरा coping mechanism different है. I was telling you that I'll not probably sleep for the next 60 hours. That's my coping mechanism because I keep myself so busy that I don't even have time to think about XYZ things that happened. But in some people's case, they'll go completely the opposite. They'll stop doing anything and they'll just be focused on one trauma. सिर्फ STUF आएगा. हाँ, हो सकता है, ये भी है. तो उस केस में then it's very difficult for them. It's probably much easier for me. I don't know who wins in this. Maybe they're winning because they are able to eventually cope up with it. Whoever's at peace wins. हो सकता है उनका counter argument ये और ही दिया गया है मुझे, counter argument that maybe you think it's peace right now, but at some point you will start realizing that it's not peace. Exactly. And because peace is also a transition, like I said, like you said, happiness. Okay, very cool. So from what I gather, you're able to manage a certain sort of status quo while, and this is your constant coping mechanism where you call it what your piecing out is basically coping with life in general, whether it was your parents, whether it was your college, whether it was XYZ and ABC. So how and when was the last time you felt down or out of peace? So now we're digging deeper. So आपने बड़ा dig किया मेरे साथ भैया. I was with my kids last month. My kids live in Sydney, so I went to meet them, and this was after a gap of 3 years because COVID की वजह से सब बंद पड़ा था. And so I met them obviously after that long time. 3 years is a long time at that age. My twins are 11 years old and my daughter is 14. And अगर मैंने 3 साल से उनको नहीं देखा तो they've grown. Obviously, हाँ. And grown means their preferences have changed. Their From life 11 to 14 बड़ा फर्क होता है यार. So I went there and I was driving and my daughter was sitting with me in the car and I played a song and she was like, "What song is this?" I was like, "This was your favorite song." And she said, "I have no idea what the song is." Ouch. And I realized that I'm stuck 3 years back because that's when I met them and they're not stuck. Obviously. And a very important thing someone said to me in a very intimate moment, that they've moved on. You haven't. And that was the time I realized, okay, this is probably and true. at that particular moment, you moved on as well. Not in that moment, but I realized that it's important for me to move on. But the point is कि वो moment जब मैंने realize किया कि they probably have moved on and they have a life which has me in it, but not the most important part of it. As a visitor now. As a visitor. And तो वो moment जो realization था तो मैं realize किया कि हाँ यार बात ये ठीक है. अब 2 तरीके हो सकते थे उसके कि यार मैं उसको लेके बैठ जाता, oh fuck, and that's how it is now and this is my life. और या कि मैं कहूँ कि ठीक है ये हो गया. How can I improve it from there? How can my relationship with my kids improve? How can I not make this the title of my life? Okay, this is Sami who doesn't have his kids and who's depressed, etc. So I don't want to do that. Probably have a higher willpower, I would say, that I can deal with this, but I also know there's a lot of people who would not be able to deal with this. It's not easy. I'm repeating the same thing. Assuming that it's easy just because I carry it well doesn't mean it's not heavy. It is heavy. But there's always a way to... Why should I continue to, improve myself? Because I don't want to cut a miserable figure in front of my kids, the same kids. If they see a father who's miserable, it'll hurt them as well. Obviously. So they would want to see me happy, whether I'm with them or not. So I have to make sure that I'm happy, healthy, and I'm taking care of myself because I have to be taking care of them as well. So वो realization they didn't make me depressed, but एक moment था उसमें I was like, oh, that has happened. So when that, and that's a big moment for a father. Of course. When
you know, yeah, when you have a kid at 27 and you meet her at 41 and she does not know what her favorite song is, it would hurt to anybody. मतलब इसके अंदर कोई आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. It would hurt. But my question then is, because this is a sad fact of life that everybody goes through. A lot of people go through this. How do they cope with this then? Because I'm trying to figure, what I'm seeing is a lot of coping happening that you call peace, which is cool. But how did you cope with this? Same thing. एक तो I have self-regulated emotions. सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इमोशंस करते कैसे? मैं आज ही पढ़ रहा था, प्लीज बता दें. Compartmentalization is the answer. I am able to do that. It's not easy again. But अब आपने, for example, I keep repeating the same thing. मुझे पिछले 20 साल में तो गुस्सा नहीं आया कभी. I don't remember being angry in the last 20 years. And it can be a longer period than that as well. But मुझे याद नहीं. और मैं वो बच्चा था कि जब घर पे मुझे याद है मैंने एक बार छुरी मारी और फ्रिज में सुराख हो गया. That was my anger. And I don't get angry anymore. ठीक है. अब कैसे? उसको सेल्फ रेगुलेट ऐसे करते हैं कि यार आपने कोई बात कर दी और मुझे वो हर्ट कर गया. अब मुझे पता है कि मेरे इमोशंस को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता. आप कितने ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स हो या रिलेशनशिप में हो या कुछ भी हो, यू स्टिल डोंट नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, राइट? तो मैं उसको बहुत बेहतर हैंडल कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू आई लेट यू हैंडल इट. अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा, इट कैन गो रॉन्ग, वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट, वी कैन थिंग्स कैन ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन. उससे बेहतर ये है कि मैं खुद कर लूँ उस चीज़ को हैंडल. जस्ट गिव मी 10 minutes, 5 minutes, I'll be fine. तो मैं ये करता हूँ, I'll take a step back. And once I'm done with that 10 minutes process, I will actually not remember it afterwards. So I'll put this somewhere here in a corner of the brain, compartmentalize it, and it'll never come back again. ये नहीं है एक वो लॉक खाना बना के रखा हुआ जैसे बहुत सारे लॉक्स हैं डिफरेंट. कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई फिल है, कोई खाली है, किसी में 2-3 लोग साथ बैठे हुए हैं. तो वो अब उसमें अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि यार ये मैंने रख तो दिया यहाँ पे बट अगले आर्ग्यूमेंट में वापस आ जाएगा, देन इट्स नॉट कोपिंग. हाँ, देन इट्स जस्ट यू नो रिजेंटमेंट भी है, देन यू जस्ट पुशिंग थिंग्स अंडर द कार्पेट, यू नॉट डीलिंग विद देम. माय केस में इट वोंट कम बैक. That's done. It's gone. That's very important. And I think a lot of times where I think a lot of relationships kind of go sour is basically when you don't deal with the emotion of problems. Let's assume कोई भी होते हैं और वो आपको याद है पिछले महीने या पिछले साल भी ये हुआ था type situation, and that's when things start to come back. And you don't have to explain it. You and I both, आपकी आंखों से समझ आ गया कि मुझे समझ आ गया है. But you know, you keep on saying it's not easy. तो मैं अपने जनरली जब बात कर रहा होता ना, मैं लोगों को कहता हूँ इट्स नॉट ईजी बट इट्स सिंपल. होना यही है, करना यही पड़ेगा. जैसे बॉडी बिल्डिंग है ना, हम लोग करते हैं, वो कहते हैं मुनीब साहब तुसी ऐ क्यों करते हो, तुसी वो क्यों करते हो, तुसी आप खाना ऐसे क्यों खाते हैं. वो मैं कहा यार आपको अगर ये रिजल्ट चाहिए ना, then this is the roadmap to it. Somebody before me has laid it down. Somebody after me will also have to walk that path in order to get there. The destination अगर आपकी कोई ऐसी है ना जो पहले हो चुकी है, that means उसका एक रोड बना हुआ है, आपने उसी रोड पे चलना है. If somebody is learned to deal with their emotions, and maybe some people might even call you suppressing your emotions, some people will call whatever, because they will call what they feel about you. देखो have you इंसान का दिमाग जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है. इट कीप्स प्लेइंग गेम्स विद यू. okay बट आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, एंड इफ आई हैड अ पेनी फॉर एवरी टाइम आई सेड दिस टू पीपल, यू आर द मास्टर, you have 10 pennies. brain is the slave, more than that. You are the master, brain is the slave. You are the master, brain. Your brain cannot tell you what to do. You tell your brain what to do. You are the master. अब ये acquired state, it cannot happen overnight. So you have to train yourself to do that. There are mind control exercises, there's meditation, there's XYZ. आप किसी को मिस करते हैं, राइट? मुझ पे अक्सर ये आता है सवाल कि यार यू डोंट मिस फलाना फलाना फलाना. आई एम नॉट टेकिंग नेम्स. तो मेरा जवाब ये होता है कि मिस करना क्या है? इट्स अ कॉन्शियस चॉइस. यू आर डिसाइडिंग टू थिंक अबाउट XYZ थिंग और अ पर्सन. एंड हाउ यू डूइंग दिस? बिकॉज योर ब्रेन इज आस्किंग यू टू थिंक अबाउट दैट थिंग. थिंकिंग प्रोसेस यहाँ नहीं होता, यहाँ होता. मेरा दिल कर रहा है, दिल नहीं करता भाई कुछ भी, दिमाग करता है. दिल का काम है ब्लड पंप करना, पूरी बॉडी में भेजना. ही इज डन विद इट, दैट पार्ट ऑफ बॉडी. उससे एक्सपेक्ट करना कि किसी को प्यार करेगा या किसी को मिस करेगा, इज रॉन्ग. यहाँ है, बाकी सब इमोशंस जो है इधर है. तो उसमें अगर आप अपना दिमाग आपको कह रहा है कि फलाने के बारे में सोचना है, आप दिमाग को बोलो नहीं सोचना, और आप नहीं सोच, सो यू नॉट मिसिंग एनीवन. तो मुझसे आप कहता है कि यार आप मिस नहीं करते, तो मैं कहता हूँ भाई आई डिसाइड और आई चूज नॉट टू.
ठीक है, बट मिस करना कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन मिस देम एंड देन मूव ऑन. बुरी बात नहीं है. मैं मिस तो एग्जांपल है ना, कोई और भी चीज़ हो सकती है, गुस्सा भी फॉर एग्जांपल है. इट्स अ फिजिकल थिंग. अमिगडाला है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड अमिगडाला. आई थिंक वी हैड दिस डिस्कशन. इट्स अ फिजिकल थिंग व्हिच इंक्रीजेस इन साइजेस व्हेन यू आर एंग्री, राइट? ओके, तो इन दैट केस जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड यू डोंट लेट योर एंगर गो टू दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड अगेन वो ब्लड पंप होगा तो ऊपर जाएगा. अब इतना गुस्सा आ सकता है इंसान को कि 8 सेकंड में, मैक्सिमम लिमिट क्या है कि 8 सेकंड में आप मर्डर कर सकते हैं सामने वाले. दैट्स द मैक्सिमम एंगर लिमिट यू कैन हैव. और आप वो एक्सट्रीम है. दूसरा एक्सट्रीम शायद वो जो मैं कह रहा हूँ कि 20 साल से गुस्सा ही नहीं आया. बट ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ बुरी नहीं लगती, बुरी लगती है, आप कंट्रोल करते हैं, आप उसको उस तरफ जाने ही नहीं देते, एंड यू कंट्रोल इट. तो मिस करना इज वन इमोशन, एंगर इज अनदर इमोशन, देयर कैन बी 10 मोर. Do you think that anyway stems from childhood trauma? Everything is connected to childhood. Everything. आपकी, मेरी, आपकी of course. And Thanks. सबकी connected होती है childhood से. It doesn't अब इस उम्र में आके मुझे कोई क्या ही हर्ट कर लेगा ना इंसान. यही बात है. आपके एक साइकिल चली आ रही है, और more often than not it's generational trauma. आपको नहीं पता कि what your parents went through. आपको ये पता कि आपके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या नहीं हुआ, यू डोंट नो दिस. और शायद उन्होंने आपसे जिक्र भी ना किया हो. हम तो फिर भी बहुत एक बेहतर एटमॉस्फेयर में हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक्सपोजर है, वी कैन टॉक एंड वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. इमेजिन आवर पेरेंट्स, दे डिडंट हैव एनी आउटलेट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड दे हैड टू लिव. That's what we think. Maybe उनके पास हो, मतलब अगर नहीं भी थे तो that's, and I don't mean to be वो about my parents. I'm just saying कि अगर उनके पास नहीं थे, it is their responsibility as young or senior adults कि यार 4 दोस्त बना लो जिंदगी में और उनसे गप लगा लो. Do you not agree? But खैर कहना आसान है ये भी. यार हमने भी बनाए हैं, उन्होंने भी बनाए होंगे. बाऊजी होते थे, मैं बचपन से स्टोरियाँ सुनता था. एक बाऊजी होते थे, बाऊजी सबके बैठ के मसले सुनते थे और बाऊजी बताते थे तुसी ऐ करो. थे एक आपी जी होंदी सी, वो सबको बैठ के बताती थी कि जी तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा तो तुम ये खाओ, तुम्हारा वो नहीं हो रहा तो अपने मियाँ को ये खिला दो. आज के बाऊजी इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम है आपके. ये जो कोचेज होते हैं, मेरे बच्चे आते हैं मेरे साथ, ये मैं कहता हूँ यार तुम लोगों की बातें सुन के लग रहा है मैं एक ऑनलाइन डेटिंग कोच की ना एक सस्ती मिसालें सुन रहा हूँ. मतलब it's literally that sad that, and I feel that's possibly one of the reasons why a lot of the younger kids are not in solid relationships with themselves, which is why they're not in solid relationships with others as well, because they're listening to Instagram coaches. And not that I have anything against the coaches. I think people are not accepting them for who they are. And for our parents, I think we also need to accept कि यार वो ट्रॉमा हमारे चाइल्डहुड में हमें जो हुआ या आपको जो हुआ, और उसकी वजह से छक 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 जो हम लोग आज बने हैं, we have to now take responsibility. It can't just be like कि ये चल रहा है जी, अब ये ऐसे ही है जी, जान दो जी, जान दो. You've learned to cope with the loss of one person, and because of that no other loss affects you like that, maybe. very very right. Absolutely. तो अब आगे if you were to have the option of doing over one thing, would that be a case, or has everything been compartmentalized? बिल्कुल नहीं यार. I have regrets in life. अगर कोई बंदा ये कहता नहीं मेरी लाइफ में कोई regret नहीं है, I'll not change anything, it's probably lying. I have done many wrong things. I've made mistakes. Some of them were beautiful, but anyway, yeah. They still are beautiful. हाँ, so you do make mistakes. आप उनसे सीखें. शायद मैंने ना भी सीखा हो, शायद मैंने मिस्टेक्स रिपीट भी की हूँ. और अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिपीटेड मिस्टेक इज अ चॉइस. अगेन आई एग्री, देयर इज अ चॉइस इन्वॉल्व्ड. बट ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रीडू नहीं करना चाहता. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड रॉन्ग, एंड प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ विच माई किड्स आर नॉट विद मी एट द सेम टाइम. तो मैं जो हूँ शायद उनको भी रीडू करूँ, या चलो मैं कुछ ना भी करूँ, एटलीस्ट देयर कुड बी सम वेज फॉर, क्योंकि जो कुछ भी, अगर इफ माई किड्स आर लिविंग अवे फ्रॉम मी एंड आई एम सेइंग यार आई एम नॉट द फादर हु इज प्रेजेंट फॉर देम, उनका भी कोई कसूर नहीं है दैट दे डोंट हैव अ फादर. ठीक है, बट दे आर लिविंग दैट लाइफ. तो मैं आई वुड प्रॉब्ली वांट टू चेंज दैट, एंड देयर प्रॉब्ली अदर थिंग्स एज वेल. और अगर वो ना हुआ होता, व्हेन यू लिव अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हिच आई हैव बीन, तो आप अपनी बिहेवियर्स में एंड योर हैबिट्स में यू गेट मोर फर्म. बिल्कुल. So now I'm not answerable to anyone for the last 5 years, and it's very difficult for me to answer to someone कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बैठ के किस साइड से उठोगे. ये नहीं पूछा किसी ने, बट वैसे कह रहा हूँ कि ये सवाल हो सकता है. Wrong side of the towel have you ever used? Is there a wrong side of the towel? देखा है? No, nobody has asked me this question. No, but I've been asked other things, not this one. Wrong side of the towel नहीं है. तो but हाँ, तो ये सारे सवाल. If there was a question that you would probably just semi-humorously consider that was like a pissing off sort of a thing, what would that be? Pissing me off? Yeah. Momentarily. यार मेरा
एक पेट पीव है. आई हैव नाउ स्पेशली, पहले भी था बट आज नाउ आई हैव अ मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन. अब मैं किस टाइम आया हूँ, आपको मैंने कहा था मैं आ जाऊँगा, मैं वाज देयर बिफोर. और मैं आज भी इस तरह, मैं आज मेरे 7 से 8 मीटिंग्स थी. आई वाज नॉट लेट फॉर अ सिंगल वन ऑफ देम डिस्पाइट द हॉट ट्रैफिक बिकॉज़ आई प्लान माय डे अकॉर्डिंगली. कुछ लोग होते हैं ऐसे, एंड अगेन इफ दैट पर्सन जो स्मर्क आ जाती है ना किसी बंदे का नाम सोचते ही. कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. हाँ. ठीक है, उनके लिए वो नॉर्मल है, मेरे लिए नहीं है. अब अगर मैं किसी के साथ हूँ और मैंने उससे कहा कि यार 11 बजे मुझे ऑफिस जाना है, मिसाल के तौर पर सुबह की बात हो रही है, मैं सुबह आया हूँ वहाँ पे, मैं रात को वहाँ नहीं था. तो अगर मैंने कहा कि मुझे सुबह वहाँ जाना है ऑफिस, तो मेरा मतलब ये है कि मैं 11 बजे चला जाऊँगा. ठीक है, अब फॉर दैट पर्सन सुबह हो रही है 11:30 बजे, उसके बाद नाश्ता होगा, उसके बाद एंड यू कांट लीव विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट बिकॉज इट्स ब्रेकफास्ट. और मुझे होगा 12:30, तो 12:30 बजे मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे कि यार मैं अब 1 घंटा लेट हूँ क्योंकि मैंने 11:30 पहुँचना था. ठीक है, और वो मुझे फिर मेरा इशू सबसे बड़ा ये है कि मुझे अनप्रोडक्टिव होना पसंद नहीं है, तो वो 1 घंटा मेरे लिए अनप्रोडक्टिव हो गया. वो सारा कुछ बेसिकली as in again goes back to कोपिंग मैकेनिज्म. हाँ. But छोड़, so two last two things. Everybody feels insecure at times. Everybody. Because हम लोग I'm leading both the questions within one. Insecurities को deal करने का तरीका on a general level, and then especially for the masculinity that we've been taught कि अच्छा जी मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते. And that's something that is very important. That's something that I try to make sure that I learn from, because एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है और एक टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग होता है. हमने कभी कभी ना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को मैस्कुलिनाइज कर दिया हुआ है, बट वो इतना मैस्कुलिन है नहीं, वो एक ह्यूमन इशू है. बट वल्नरेबिलिटीज़, इनसिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई अपनी कैसे करें. कुछ बच्चे होते हैं वो स्लाइटली फैट, उनको दूसरे आइडेंटिफाई कर देते हैं एज फैट. कुछ बच्चे होते हैं हु आर मे बी नॉट एज वेल स्पोकन. हम लोग लकीली वी वर taught to be confident, or we learned to be confident in college, and उसके बाद से ठक life has been decent. तो जिसकी जो भी insecurity होती है वो किसी वजह से होती है. Is there a way to pinpoint that insecurity and figure it out and then leading into masculinity? यार देखो, एक तो ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि इनसिक्योरिटी कोई इम्पॉसिबल या बुरी बात है नहीं. बिल्कुल. हम कॉन्फिडेंट हैं आपने खुद का, और वी अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेल इन लाइफ. डू वी नॉट हैव इनसिक्योरिटीज? आई हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज. आई हैव बैड टीथ. आई डोंट स्माइल विद माय माउथ ओपन. It's a fact. I am insecure about my nose. I had an accident when I was 21 years of age. Now it's crooked, right? I'm insecure about my physical appearance. तो बट मैंने इस चीज़ को, अगेन वही बात है कि मैंने टाइटल नहीं बना लिया अपनी लाइफ का, ओह आई हैव बैड टीथ, आई कांट डू एनीथिंग. अगर सामने वाला बंदा ये कहता है आई एम शॉर्ट या आई एम फैट, और उसकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और मिजरेबल हो गया वो, उसने इसको सेल्फ पिटी का एक टूल बना लिया कि आई हैव दिस इनसिक्योरिटी, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. इनसिक्योरिटी हो सकती है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारी सोसाइटी का, स्पेशली बीइंग अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, बट नॉट रियली. एक इशू ये है कि हम हर चीज़ को सेम तरीके से मेजर करते हैं. एक स्टूडेंट है, चाहे उसकी कोई भी स्ट्रेंथ हो, उसको फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने, उसको आर्ट्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने, उसको मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स लेके आने, बेशक उसका आर्टिस्टिक माइंड हो, बेशक उसका मैथ्स वाला माइंड हो, एंड सबकी वैल्यूएशन क्लास 1 से लेके 10th तक या ए लेवल्स तक सेम चीज़ों पे हो रही है, तो उसके बाद कहीं जाकर उसको चूज़ करने का मौका मिलता है. अगर हम ये कोई ऐसा सिस्टम बना लें, सब लोग, पेरेंट्स प्लस सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल देमसेल्व्स मिलकर, कि यार जो इनसिक्योरिटीज़ हैं मैं उनको साइड में रखूँगा, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपार्टमेंटाइज. बट स्ट्रेंथ्स भी तो होंगी ना. कोई ये तो नहीं हो सकता कि बंदा सिर्फ इनसिक्योरिटी से बना हो. 99 नहीं, That's his strength. That's his strength. Nothing can go wrong now because he's already. It's uphill from here. No, exactly. Bruce Willis ने मूवी बना दी थी उसको. तो जो स्ट्रेंथ्स होती है इनको पकड़ लेना. अब हमारी स्ट्रेंथ शायद ये थी कि अब ये लोगों के लिए मसला होता है. मैं आज तक, आप भी, आई एम श्योर, अब हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, आपके पास शायद पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट हम बात किए जा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है. दूसरा पेज है. कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है कि सामने इस तरह बैठ के बात नहीं कर सकते. हाँ. इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो मैं तो फिर कहता हूँ आज तो मसला हल हो गया, आज पढ़ना नहीं है, आज प्रेजेंटेशन देनी है. हाँ. कुछ लोग कहते हैं यार पढ़ा लो, प्रेजेंटेशन ना दे दो. ठीक है. अब मेरी स्ट्रेंथ ये थी जो मैं आपको बता रहा हूँ. हमने कहा यार 2.67 GPA है ना, इट नेवर बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर माय करियर बिकॉज आई हैड दिस स्ट्रेंथ. मैं बैठ जाता कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे. आई नेवर केयर्ड क्योंकि मुझे पता था मैं इस पर खेल लूँगा. तो आपने करना ये नहीं कि आपने इनसिक्योरिटीज को कैसे हाइड करना है, आपने करना है कि अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है. पॉजिटिव पे खेलें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अलग है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अलग है. नेगेटिव होगी अपनी जगह, उसको साइड में करें, कंपार्टमेंटलाइज करें. जो स्ट्रेंथ है वो लेके आएँ, एंड देन
वो खुद ही मैनेज हो जाएगा सर, हमारा भी हो रहा है। So whatever you focus on grows basically. If you focus on your insecurities, they'll become the bigger part of your life. And आज ही हम लोग एक जगह पे पहले थे तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि आपकी फिल्म, हर कोई एक फिल्म है इंसान, फिल्म नहीं है, फिल्म है। तो वो जो फिल्म है उसका टाइटल क्या है वो आपने डिसाइड करना है. दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. आपकी फिल्म का क्या टाइटल? आपकी फिल्म का क्या टाइटल है? आपकी ये मैं भी बता रहा हूँ पहले. मेरी फिल्म का टाइटल है इंस्पायर बेटर लाइफस्टाइल. ओके, तो वो है हायर टाइप का लग रहा है मुझे. हायर किसी इलेक्ट्रॉनिक क्रीड का गाना है पुराना, या नथिंग मैन बेटर मैन, पर्ल जैम. बट एक एक्चुअली दो गाने व्हिच इज डाइंग टू लिव एंड ड्रीम ऑन. Those are two of like my motto songs. But so वहाँ जो आपकी फिल्म का जो आपकी किताब का जो टाइटल है, that's you have to decide. These insecurities are just maybe a page or two or a chapter maximum. Absolutely. And the rest आप जितना fill up करते रहोगे अपनी किताब को, वो आपकी ज़िंदगी बनती रहेगी. Cool. Masculinity is something that I wanted to speak to you about because you've always been that macho, good, sweet, decent macho man. Not वो के oh tadi. But you know, so what do you know about masculinity and how do you know about it? देखिए, एक तो मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर ले, मर्द को दर्द होता है. बहुत अच्छी बात. ठीक है, याद आ गया मुझे कुछ, लेकिन बहरहाल हाँ तो दर्द होता है. और ये जो सारे मतलब डोले शोले आपने ही बनाए हुए, मतलब माशाल्लाह आप तो खैर डाइट भी करते हैं कंट्रोल, मैं तो वो भी नहीं करता. बट इस सब के बावजूद अंदर से हम उतने ही फट्टू होते हैं ना कोई और इंसान होता है. ठीक है, तो मैस्कुलिनिटी शायद एक टाइटल है जो सोशल कंस्ट्रक्ट ना, वो बायोलॉजिकल चीज़ है. क्योंकि एक आप देखेंगे बहुत से मर्द ऐसे हो सकते हैं जो कि फेमिनिन हो पर से, और जो फिजिकली वीक हो. ठीक है, और कुछ चीज़ अगर हम उसको भी निकाल दें, फिजिकलिटी को निकाल दें, एनाटमी को निकाल दें, तब भी इमोशनली वीक हो सकता है इंसान. तो मैस्कुलिनिटी क्या चीज़ है? एट द सेम टाइम द ऑपोजिट थिंग, एक औरत है जो फिजिकली भी स्ट्रांग हो सकती है और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है. और हमने देखी है, मैं आई वुड से कि आई हैव सीन स्ट्रॉन्गर विमेन इन माई लाइफ एज कम्पेयर टू मैन. तो क्या वो मैस्कुलिन विमेन है? नहीं, वो विमेन है. दे आर विमेन एंड दे आर फेमिनिन, बट दे आर फेमिनिन इन देयर ओन वे. मैस्कुलिन तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि आज कोई बंदा है या नहीं. ठीक है, अब उसको आप इक्वेशन से निकालने बड़ा मुश्किल काम है. हमारी सोसाइटी का इशू ये है कि देयर इज इंटरनलाइज मिसोजिनी इन विमेन. विमेन डिसाइड कि यार अब हमारे घर में मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ. मेरी माँ 6 ख़वातीन थी मेरी ज़िंदगी में, जो मैं आई हैव ग्रोन अप इन दैट. मेरे किसी ने नखरे नहीं उठाए भाई. मैंने वही काम किया है जो मेरी बाकी बहनों ने किया है. अपने खाने भी खुद किए हैं मैंने, जो भी किया है. मेरे जूते कभी किसी ने पॉलिश करके नहीं दिए. बट मेरे ही गली में एक और साहब थे जो जहाँ मैं रहता था, वो 3 बहनों के इकलौते भाई थे. तो उनकी अम्मा का ये कहना था कि अगर मेरे घर में एक अंडा होगा बनाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो मैं अपने बेटे को दूंगी, बेटियों को नहीं दूंगी. हमारे साथ कुछ भी नहीं, मैंने बहनों से मारे भी खाई, सब कुछ किया. वो इक्वालिटी मैंने अपने घर पे देख ली पहले दिन, क्योंकि माई फादर वॉज अब्रॉड एंड माई मदर वॉज द मैन ऑफ द हाउस. ठीक है, एंड शी वॉज डूइंग एवरीथिंग. शी वॉजंट एजुकेटेड बट शी वॉज रनिंग द बिजनेस, शी वॉज रनिंग द हाउस, शी हैड 6 किड्स टू मैनेज हाउस वगैरह सब कुछ. दिस इज एज मैस्कुलिन एज इट गेट्स. दिस इज मैस्कुलिनिटी टू मी. जब मैं औरत मार्च में आके खड़ा हुआ होता हूँ, इट्स बिकॉज दीज वुमेन रेस्ड मी. जब even my father was not doing much and I was studying, I was still a student. Who raised me? My sisters raised me. मेरी माँ तो when I was 17 she was gone. उसके बाद से 25 साल गुजर चुके हैं, तो my sisters have been my mother. And my father in the last few years has not been able to even move because he's not well. तो who was raising me at that time? My sister. तो मेरे लिए तो that's masculinity. तो आज अगर मैं देखता हूँ mother of my kids, she is raising the 3 kids alone in Sydney. That's masculinity. मैं तो यहाँ बैठा हूँ आराम से, मैं अपने आप को बोलूँ masculine हूँ, macho हूँ वगैरह वगैरह. What am I really doing? Yes, I'm doing things, but they don't necessarily mean masculine things. मैं घर चला रहा हूँ अकेला, मैं अपना खाना खुद करता हूँ, मैं हाउस खुद मैनेज करता हूँ, तो am I feminine? No. तो ये masculinity, femininity एक सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं, लोगों ने बना लिए हैं. अगेन वही बात है, आप इसको टाइटल बना लें अपनी लाइफ का तो बना लें यार, masculine या macho, बट है कुछ नहीं. It's nothing. It's just a facade. Very cool. Whoa, काफ़ी intense हो गया. So, thank you so much, man. Thank you so much. This is very insightful, very interesting. I think the gist of it ends up being compartmentalization, and everybody, no matter what you see on the face of it, everybody is fighting their own wars. Everybody is dealing with their own stuff. Everybody is dealing with their own. You might think कि उसकी ज़िंदगी बड़ी फिट है. पहले मुझे लग रहा था कि समी से ना मैं बहुत सारी चीज़ें. And today I met Sami again after a very long time, and it was very cool. I had a very human soul level कि अच्छा यार ये भी इंसान है जिसके अंदर काफ़ी सारे issues हैं, and for us to recognize
issues is not a bad thing. These are strengths. These are things that you're dealing with and everybody's dealing with. So thank you so much on shedding light, man. This was a lot of fun and good luck with your film. हाँ, of course, inshallah, one day. आपकी फिल्म का नाम रखा है? मेरी फिल्म का या मेरी फिल्म का? फिल्म का. जो मेरी लाइफ की फिल्म है, हाँ. that's Misunderstood. या मिस्टर अंडरस्टूड. हाँ, मिस्टर अंडरस्टूड. ये चुस मारी है Let's misogynize this situation. मुनीब ने एंड में चुस मारी है, इसको इग्नोर करें, but yeah, misunderstood. The most misunderstood man in the world, but just misunderstood makes sense as well. So, done. Thank you so much, man. Thank you. See you. Take care. Hafiz.